Am I audible? I hope I'm audible. Hi guys. Hello everybody. How are you? We'll just start in 2 minutes. Let other people also join, like if they are joining. Hello guys. It's 8:14 right now. Let's start at 8:16 maybe. ठीक है. And yesterday we did human health and diseases, and I hope it was clear to you all. Next we'll do the next chapter उसका जो है, and a lot of you also said to do strategies वाला chapter. So we'll just do microbes first and then we'll do strategies. Strategies इतना कुछ मुश्किल topic नहीं है if you haven't really studied it a lot, so it's not that difficult, so you don't have to worry about it. We'll start at 8:16.
चलो फिर स्टार्ट करते हैं। काफी वेट कर लिया और लोगों का। जस्ट अ सेकेंड। Hmm. So, wait. Yes. All right. So, hello, welcome everybody. Welcome you. I welcome you all to another video, live PYQ solving of CUET in ExamFactor. And before moving on with the lecture today, I'll just quickly introduce myself. My name is Aarushi Anand, and I'm from Hindu College, and I'm currently pursuing BSc Honors Zoology. I got 100 percentile in biology, psychology, and English, and around 99.8 in physics and chemistry. So that was about myself. Okay, there is also some things which, other than this video, like these video PYQ solving sessions, ExamFactor is offering you all. So the first thing is mock test series. In that, they uh, they have curated mock tests as per CUET syllabus and pattern. So these are available for the subjects on your screens, and you can actually do it for biology or any other subject which you are giving a CUET exam in. Helpful रहते हैं, काफ़ी practice हो जाती है. So yes, you can do that, and you should do that actually. Now, crash courses about crash courses. Crash course is also something that Exam Factor is offering you, right? And so crash course mein they have these one shot video lectures in which they cover one chapter per subject. So रिविजन हो जाएगा तुम लोगों का, एंड रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रैक्टिस और रिविजन ये सब दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ये तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा. एंड एज आई सेड, like as I say in every class, you can check this out on their websites, and if you're interested, somebody will contact you for further thing. And अब थोड़ी तैयारी speed up कर लो, because not even, I think, what, around 20 days are left. No, 22 days are left. So you should speed up your preparation. Right, so let's start आज के PYQs. एक second, I'll just open it for you all. Yeah, so here they are. Okay, so this is a type of question which we've already done. मतलब हमने ये question एक बार किया है. मतलब ऐसा नहीं था, sorry, similar question we have done. So I want you to tell me, like I want you guys to tell me the answer for question number 1. इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं. I'm sorry. So it says select the organism which does not undergo parthenogenesis. ठीक है, so your first option is honeybee, second option is rotifer, third option is turkey, and fourth option is fruit fly. So answers in the comment, and otherwise also I'm gonna give you a minute to solve this.
Right. So since you're not, since I did not get any answer in the chat, I will tell you the answer myself. So देखो, हनी बी, हनी बी तो हमने दो दो जगहों पे पढ़ा है that they do undergo parthenogenesis. Now what is parthenogenesis? Parthenogenesis is when one of the like one of the gender, male or female, or organism का एक part, it develops without fertilization. So it develops directly out of egg. ठीक है, तो हनी बी में तो ऐसा होता है, we all know that, right? And drones कहते हैं उनको, male honeybees को. Rotifers में भी होता है, we've read it in chapter number 1. And turkey में भी it happens. So the option left with us is fruit fly. We can also check the answer. The answer is option number 4. Option number 4 is correct. So the answer is fruit fly. Now, question number 2. So the method of producing thousands of plants through tissue culture is called as 1. Soma clones, 2. Micropropagation, 3. Somatic hybridization, and 4. Vegetative propagations. And again, I'll give you some time to solve this. आंसर दे दो. चलो तो मैं बताती हूँ आंसर. द आंसर इज 2. माइक्रो प्रोपगेशन. ठीक है, तो हम माइक्रो प्रोपगेशन, आई होप ये स्ट्रैटेजीज वाले चैप्टर में से है. सो व्हाट इज माइक्रो प्रोपगेशन एग्जैक्टली? माइक्रो प्रोपगेशन इज ऑल्सो नोन एज प्लांट टिश्यू कल्चर, right? So it is a technique used for rapid vegetative multiplication of plants, and it is used by done by using explants, right? And explant can be anything, a living tissue or a cell of the plant, right? So through this process, as the question says, a large number of plants can be produced in a short span of time. Now question number 3. Question number 3 is, which of the following statements are correct regarding decomposition? ठीक है, so decomposition is largely oxygen requiring process. Decomposition, remember, ठीक है. And the second statement is, the rate of decomposition is controlled by chemical composition of detritus and climatic factors. C says dry and cold environment favor the decomposition, ठीक है. And D says if detritus is rich in lignin and chitin, the decomposition rate is faster. So now what would be the answer?
आई होप यू गॉट द आंसर. ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है बिकॉज क्योंकि ये वाला आपको बहुत सारे चीज़ें असेस करनी पड़ेगी इन दिस क्वेश्चन, राइट? सो लेट्स स्टार्ट, लाइक लेट्स डू दिस. ठीक है. सो द आंसर इज आपका this is question number 3, right? So okay, the answer is, what should be the answer? तो चलो डिस्कस करते हैं इसके बारे में. हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट्स, राइट? सो decomposition is largely oxygen requiring process. सोचने वाली बात है. ठीक है. B, the rate of decomposition is controlled by chemical composition of detritus and climatic factors. Okay. C says dry and cold environment favor the decomposition. Well, warm environment, ठीक है, warm and moisture वाली conditions जो होती है ना, dry नहीं, moisture वाली conditions, those conditions favor environment. वो climatic part में आता है, moisture and warm, and जो detritus rich in lignin and chitin, that comes in the chemical composition, right? एंड इसका क्या होता है केमिकल कॉम्पोजिशन? इट्स द ऑपोजिट. ठीक है. काइटिन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू ब्रेक डाउन, सो इट्स द ऑपोजिट. सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए एंड बी, विच इज 1. ठीक है. सो दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. सो we have to identify the organism which is a source for single cell protein and is grown on commercial scale. ठीक है. सो इसका आंसर इज काफ़ी सिंपल वैसे तो, बट ट्राई डूइंग इट एट योर ट्राई डूइंग इट योर सेल्फ वंस. ऑल्सो दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द it's also from the strategies chapter, I believe. Okay, so राइट नाउ द आंसर फॉर दिस. ठीक है. तो एसोटोबैक्टर्स जो होते हैं, राइजोबियम जो होता है, एसोस्पाइरलम जो होता है, these organisms are mostly these microbes are mostly the microbes जो आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करते हैं, राइट? एंड ये तो हमें पता ही है राइजोबियम के बारे में, एसिटोबैक्टर के बारे में, एजोस्पाइरुलम के बारे में, राइट? सो इट ओनली लीव्स अस विद स्पाइरुलिना. So microbes like spirulina can be grown easily on material like waste material, and they are being grown on an industrial scale as a source of good protein, right? So it is used as a single cell protein. How is it used as a single cell protein? All right. Um, let's move ahead. ठीक है. Next question on your screens.
Question number 6. I mean, it should have been 5, I think. But yeah, 6. So arrange the following events in correct sequence. A. Formation of zygote. B. Formation of blastocyst. C. Implantation. And D. Formation of morula. This is a pretty easy question. मतलब हाँ ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है बट क्वेश्चन तो बहुत ही pretty simple, right? So I'll give you again a minute to answer this. चलो as I said बड़ा easy question है तो मैं इसका आंसर बताती हूँ. Yep. So formation of zygote, blastocyst, implantation and formation of morula. Right. So सबसे पहले क्या होना ज़रूरी है? सबसे पहले तो आपका इम्प्लांटेशन होगा, ज़ाइगोट बनेगा ऑब्वियसली, राइट. एक मतलब एक फीमेल गैमीट और मेल गैमीट मिलेंगे तो सबसे पहले व्हाट हैपन्स, सबसे पहले ज़ाइगोट बनेगा, राइट. देन जब ज़ाइगोट बनेगा तो सीधा ब्लास्टोसिस्ट तो बन नहीं सकता, राइट. तो ब्लास्टोसिस्ट इज समथिंग दैट कम्स लेटर इन स्टेज, राइट. सो सबसे पहले उसके बाद मोरेला बनेगा. मोरेला क्या है? वो जो 8 सेल स्टेज होता है. देन यू मस्ट हैव रेड कि जो आपके फिलोपियन ट्यूब मतलब जो इम्प्लांट फिलोपियन ट्यूब तक मॉडला बनता है, देन उसके बाद इम्प्लांटेशन होती है, राइट. सो उसके बाद आपने वो क्या कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, जो IVF टेक्निक्स होती है उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती है, उसमें जब हमको मॉरला या फिर 8 सेल स्टेज इम्प्लांट कराना होता है तो हम कहाँ कराते हैं? फिलोपियन ट्यूब में, एंड देन उसके बाद इम्प्लांटेशन हैपेंस, राइट. सो wait, the answer is A B D E. Oh sorry, A D B E लिखा है ना, वो C होगा, sorry, C होगा, I'm sorry. Yep. So the answer becomes what? Answer becomes A, right? Now question number 7. Yep. So question number 7. Which of the following is used to make the bacterial component as competent cell to take up DNA? Very easy, like very very easy. Still a minute to answer this. चलो तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको करने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए. व्हाट शुड बी द आंसर? कार्बोनेट आयंस. क्या आंसर कार्बोनेट आयंस है आपका?
क्या आपका आंसर कैल्शियम आयंस है या फिर सोडियम आयंस है या फिर सल्फेट आयंस है? सो देखो, आपका जो आंसर होता है ना, आई मीन जो आपका कॉम्पोनेंट सेल बनाता है ना, वो हमें चाहिए होता है +2 का चार्ज। ठीक है, सो +2 का चार्ज हमारे पास कहाँ पे है? +2 का चार्ज हमारे पास कार्बोनेट पे नहीं है, तो +4 है। कैल्शियम पे है ना? एंड सोडियम पे नहीं है। सोडियम इज व्हाट? सोडियम इज +1, राइट? सल्फेट नहीं है, सो डाइवेलेंट कीटायन चाहिए। डाइवेलेंट कीटायन इज कैल्शियम। डाइवेलेंट कीटायन यूज करते हैं, तो आंसर इज कैल्शियम। एंड कॉम्पिटेंट सेल बनाना क्या होता है? देखो, सेल डज नॉट टेक अप। अच्छा हाँ, ऑल्सो आज ना मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मेरे से माइक्रोब्स वाला चैप्टर थोड़ा हो नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे को अम, कुछ काम है। ठीक है, तो आई थिंक वो कल ही करते हैं, वो वैसे भी एक दिन में हो ही जाएगा, है ना? तो आज की क्लास थोड़ी छोटी रहेगी। ये ख़त्म करके ये सारे क्वेश्चंस, आई थिंक देयर आर 10 to 15 क्वेश्चंस, उसके बाद वील कंटिन्यू टुमारो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। Early Greek thinkers thought that units of life called spores were transferred to different planets including Earth. Identify the term associated with the above. 12 तक करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि 2 क्वेश्चंस मैंने हटाए थे बीच में से, क्योंकि वो रेपिटेड थे, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो हम 12 तक करेंगे आज। आज बिल्कुल भी थोड़ा टाइम इश्यूज हो गए, राइट? बट कल हम देन कवर अप करेंगे। कल की क्लास थोड़ी लंबी कर देंगे। या आप लोग रिस्पॉन्ड करो तो आज भी करवा दो। बताओ इसका आंसर क्या होगा? यप, सो राइट, इसका आंसर इज, मतलब देखो, हम जब कह रहे हैं स्पोर्स, स्मॉल यूनिट्स ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्स, ठीक है, तो ये एबायोजेनेसिस तो नहीं हो सकता, है ना? हम कह रहे हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम कह रहे हैं स्पोर्स आए, नहीं कि हम कूड़ा करकट से लिविंग लाइफ आ गई। और हम ये भी नहीं कह रहे कि लिविंग लाइफ से लिविंग लाइफ आई, तो बायोजेनेसिस भी नहीं हो सकता, राइट? सो द आंसर बिकम्स पैनस्पर्मिया, एंड इट इज नोन एज द थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। अगर तुम्हें ये क्वेश्चन लग रहा है कि थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है, तो एवोल्यूशन चैप्टर कर लो। एवोल्यूशन चैप्टर हम भी करेंगे थोड़ा सा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। In electrophoresis, the separation DNA fragments can be visualized: 1. In visible light, 2. In visible light with staining, in UV radiation without staining, and in UV radiations after staining with ethidium bromide. So now you have to tell me which one of these is the right answer. And there are legit only मतलब two conditions that are given to visualize DNA fragments. उसमें से एक सही, मतलब उसमें से आप बताओ कौन सा आंसर है। And also tell me that after visualizing, can we cut the DNA fragment
out of the electrophoresis, what is that called? Like, what is that process called? So you have to tell me that as well. I mean, अच्छा अगर live नहीं हो तो think about it also. All right. Ouch. Sorry. हाँ सॉरी क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया सॉरी हाँ सो हाँ तो मैंने आपसे पूछा था कि वो प्रोसेस क्या होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं एल्यूशन एंड द आंसर इज इन यूवी रेडिएशन आफ्टर स्टेनिंग विद एथेरियम ब्रोमाइड सो क्या आता है ऑरेंज कलर इश लाइक ऑरेंज इश कलर आता है एंड यू कैन नॉट एक्चुअली सी डीएनए फ्रैगमेंट विद द नेकेड आईज समझो ना सॉरी विजिबल लाइट बहुत छोटे होते हैं तो यू कांट सी है ना आंसर भी है आपका फोर्थ also. Okay, now question number 11. Mammals are able to survive in Antarctica or in the Sahara Desert as they are 1. Conformers, 2. Partial regulators, 3. Regulators, and 4. Migrants. इसका आंसर थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग सकता है प्रोबेबली लग रहा है कि नहीं लग रहा मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि नहीं ये थोड़ा सा क्या हो गया कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया थ्योरेटिक मतलब थोड़ा दिमाग लगाने वाला हो गया एंड ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं सीबीटी में सिर्फ इजी क्वेश्चंस ही नहीं आते ऑल्दो obviously you have an option to leave it but still what do you think is the answer okay all right I'll tell you the answer for this question is regulators ठीक है the answer for this question is regulators now why एक सेकेंड इसको हम आपको दिखाते हैं राइट
So, mammals are able to survive in Antarctica or Sahara Desert, right? And they are regulators. Now, why? So, basically, evolutionary biologists they believe that the success of mammals is largely due to their ability to maintain a constant body temperature. ठीक है हम वैसे भी जब मैमल्स की बात करते हैं तो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इज अ थिंग राइट व्हेन वी टॉक अबाउट फिशेस तो वो होती है कोल्ड ब्लडेड but when we talk about mammals, we have a constant body temperature, and that is the reason of our success. ठीक है. So, uh, and and thrive whether they live in Antarctica or they live in the Sahara Desert. All right. So now let's move further. This is the question. This is question number 12. Again, I said कि मैंने बीच के questions हटाए थे क्योंकि वो questions हम already solve कर चुके थे. So now 12th question is the last question for today. Methanogens do not produce one carbon dioxide and methane, methane and hydrogen, hydrogen and carbon dioxide. So and fourth is nitrogen and oxygen. What is the answer? Guys बता दूं अगर if you want to discuss any other chapter चलो microbes वाला chapter कर ही देते हैं ठीक है तो जब तक you are thinking of an answer for this question I'll just quickly open the PDF for that chapter ठीक है it's microbes in human welfare and it's a very small chapter and will not take a lot of time in it I'm already telling you ठीक है तो ठीक है चलो फिर आंसर फॉर दिस डिस्कस कर लेते हैं देखो मिथेनोजेंस में मीथेन नाम आ रहा है तो मीथेन ऑब्वियसली प्रोड्यूस करता है ठीक है एंड मीथेन तो है दोनों में सो 1 and 2 कैन नॉट बी द आंसर 3 it says hydrogen and carbon dioxide so you know that methanogens produce biogas है ना they help in the production of biogas and hydrogen and carbon dioxide is a part of biogas so तो हमारे पास सबसे suited option जो बैठता है वो nitrogen and oxygen है so the answer becomes 4 it is pretty evident it is pretty given question given about कि आंसर इसका क्या होना चाहिए so that was it for today as of questions में now let's do आपका microbes वाला chapter let me open it real quick हाँ जी so I think it is coming right आ रहा है ना screen पे हाँ सो माइक्रोब्स हमारे पास बहुत सारे तरीके के होते हैं बैक्टीरिया फंगाई एंड दे कैन बी ग्रोन इन न्यूट्रिटिव कॉलोनीज टू फॉर्म sorry nutritive media to form colonies and sometimes it cannot be seen in the naked eyes and colonies जब बन जाती हैं it can be seen in the naked eyes राइट एक बार ये बहुत अच्छे से याद करना ठीक है ये जो इसका पार्ट है हेड कॉल ओ हेड 19th November का ड्रामा हो गया ओके हेड कॉलर टेल प्लेट पिंस एंड प्रॉन्स ऑलराइट तो ये याद रखने की ज़रूरत है कि ये वाले जो मतलब प्रॉब्ली दे गिव यू दिस डायग्राम्स एंड दे आस्क यू व्हाट इज दिस नाउ दिस इज अ फ्लैजुला दिस इज रॉड शेड बैक्टीरियम एंड दिस इज व्हाट स्फेरिकल को हम क्या बोलते हैं स्फेरिकल बैक्टीरियाज आर कॉल्ड चलो बताना फिर बाद में लाइक नेक्स्ट क्लास में लास्ट बट बताओगे तुम्हें स्पेरिकल बैक्टीरिया स्पाइरल बैक्टीरियाज एंड दीज रॉड शेप बैक्टीरियाज वो क्या बोलते हैं ऑलराइट सो हमारे पास हम सबसे पहले बात करते हैं कर्ड बनाने की जहाँ पे माइक्रोब्स होते हैं है ना सबको पता है वी यूज़ अ लिटिल बिट ऑफ इनोकुलम दैट इज़ अ लिटिल बिट ऑफ कर्ड दैट वी यूज़ जो एक्ट करता है एज अ starter like it contains millions of lactic acid bacteria and उसके बाद it helps in the growth of other bacteria as well जितना growth होता जाएगा उतना curdling होती जाएगी and these bacteria improve the nutritional quality by increasing vitamin B12 just a second guys
यस, आई एम सो सॉरी, कुछ शोर आ रहा था तो बंद करने गई थी मैं। हाँ, तो वी वर डूइंग कर्ड, है ना। कर्ड हमने समझ लिया कि क्या है, राइट। सो विटामिन B12 होता है एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेज द न्यूट्रिशन, सॉरी, हमारे क्या स्टमक में गट बैक्टीरिया मतलब भी कहते हैं उसको, राइट। प्रोबायोटिक्स कहते हैं हम इनको। हाँ जी। सो द डो विच इज़ यूज फॉर मेकिंग फूड्स, वो उसमें हम जब फर्मेंटेशन करते हैं तो पफ्ड अपीयरेंस क्यों आती है, दैट इज बिकॉज ऑफ CO2 गैस। दिस इज ऑल्सो PYQ इन CUET. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। वी हैव डन इट अ लॉट ऑफ टाइम। सो आई मीन मतलब you might have must have done a lot of time class 6 से only. So हाँ जी। सो हम जब देखो हमारे पास एक यीस्ट होती है, उसको हम कहते हैं सैक्रोमाइसिस सर्विसे। एंड जब हम ब्रेड बनाने के लिए यूज़ करते हैं तो वो बेकर्स यीस्ट होती है। एंड जब हम उसको अल्कोहल बनाने के लिए यूज़ करते हैं तो दैट इज़ नोन एज ब्रूअर्स यीस्ट। ठीक है, होती एक ही है बट कहते अलग अलग दो नाम है, राइट। सो टोडी, इट्स अ ट्रेडिशनल ड्रिंक। इट कम्स फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ सैप ऑफ द प्लांट। ठीक है, माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज टू फर्मेंट fish, soybean, bamboo, and cheese is one of the oldest item in which microbes were used. ठीक है, तो हमारी स्विस चीज़ पे क्वेश्चन भी आया था। स्विस चीज़ की प्रोडक्शन किस चीज़ की होती है, दैट्स लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय बैक्टीरियम नेम प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मानी। ये ना, आई वांट यू गाइस टू मेक अ टेबल जहाँ पे तुम लिखो किस चीज़ के बारे में, कर्ड के बारे में। ठीक है, क्या है, बैक्टीरिया है, फंगस है, क्या है ना। जैसे यीस्ट है, ये यीस्ट है ना। बैक्टीरिया होगा व्हेन वी टॉक अबाउट स्विस चीज़, राइट, या फिर कर्ड। ठीक है, और अभी आगे भी आएंगे, उसमें भी करना। ठीक है, सो लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 एंड रॉकफोर्ड चीज़ होती है फंगाई की वजह से। ठीक है, एंड दिस गिव्स देम द पर्टिकुलर। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो हमने पहली बात की फर्मेंटर्स, फर्मेंटेड बेवरेजेस होती हैं, है ना। एंड दो टाइप की यीस्ट, सॉरी, दो टाइप की बेवरेजेस वी हैव बेवरेजेस जो विदाउट डिस्टिलेशन होती है एंड जो डिस्टिलेशन के साथ होती है। तो वाइन बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, वेर एज विस्की, ब्रांडी एंड रम आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रॉथ। तो ये ना तुम ऐसे याद कर सकते हो कि डिस्टिलेशन करने की जरूरत कब पड़ेगी, when you want the alcohol amount to be more. So wine and beer have less amount of alcohol. Whiskey, brandy